Yes, roll number 14. Yes, sir. Yes, sir. I'm audible, sir? Yes. Yes, sir. Good morning, everyone. I'm Dr. Sandeep Kotkar from VJTI College, Mumbai. I'm very happy to introduce here Dr. Om Prakash Shivajirao Jadhav, sir, Associate Professor, Department of Statistics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Sir is a member of the State Backward Class Commission, Maharashtra State. Sir has 15-year experience of teaching to the PG classes. Sir is a research guide, and 3 students has done PhD and 3 students under the process of PhD. Research area interest of the sir: applied statistic, regression analysis, big data analysis. And sir has expert in the various subject. One of them, sir is presently working as a member of State Backward Class Commission, Maharashtra State, since last December 2013 to till dates. Sir has worked as an expert statistician in the State Backward Class Commission, Maharashtra on the Maratha Reservation in 2018. Sir analyzed all the data and submitted that report to the commission. Sir is working in various subjects since last 3 years, Maharashtra level. Sir has worked as a Maharashtra coordinator, CSMN REF fellowship for the research student in Sarthi, Pune. Sir is a member of the statistician NEP policy 2020 in Maharashtra. Total number of the project done by the sir. First one is impact assessment study of farm ponds in 3 districts of Aurangabad division using statistical tools funded by the UGC. Optimization technique used in water supply chain management in Aurangabad city. The sir has published 42 research paper in national and international journals. 2 books has published by the sir. One is Introduction to Sampling Theory, and second is Operations Research. Then sir has taken different types of the sir has done different types of the co-curriculum activities. One of them highlighted here. So working as a SPSS trainer in various institutes, sir has worked as a resource person in PhD course work organized by the university. Then sir was a committee member for international conference on recent advance in statistics and their applications held at Department of Statistics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar in December 2013. Sir has worked as a PG NSS program officer in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Then sir was a director of the PG examination. Sir was a committee member for the National Conference on National Workshop, Department of Statistics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Sir has delivered guest lecture in various colleges. Even sir was a board of study member of various universities. One of them, Solapur University, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, Mahatma Gandhi Mission University, and Stock College of Mumbai. Then sir has a membership also. One is life member of the OR Society of India, Kolkata, means ORSI. And second one, life member of Indian Society for Probability and Statistics. I welcome to sir here to deliver sir's lectures. We all are eager to listen to the sir. Thank you, sir. I hand over my mic to the sir. Thank you, one and all. Thank you. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So firstly, good morning, all of you. So firstly, I would like to thank this orientation program coordinator, Professor Rafe sir, and its team to giving the one chance of deliver the lecture of application of statistics in research with SPSS softwares. So friends, today's topic, why I am choosing this? Because huge amount of data. We are the researcher, we are the faculty member in various institutes, various colleges around the India. But one thing is there,
so many statistical data will be generated. So how to analyze the such type of data? What is the use of statistics in your research? If you want the quality research, the statistical tools must be used in your. So in this lecture or this in first and second session, I will cover first sessions. I will cover what is the actual, what is the meaning of the statistics, what is the need of the statistics, and we are the researcher, and we know what is the research process and all the things. And in the second point, what is the research process? There are 7 steps in the research process where statistics will be used. And what is the role of the statistics in this research process? I will talk about that part. Then, how many types of the data? It is the qualitative data means what? What is the quantitative data? If you identify the nature of the data, then it is very easy to understand the statistical tools. Because every statistical tools, it depends upon the nature of the data, types of the data. If firstly we identify the nature or types of the data, then it is very easy to apply the statistical tools. Then next point, I will talk about the types of the statistics. Types of the statistics. There are 2 types of the statistics. The first is the descriptive statistics. Another is the inference of statistics. This is the basic of the statistics. Then main important role is the how to use the SPSS software. This is the very easy and very understanding software. It's the basic concept of the SPS, statistical package for social sciences softwares. It is useful for the also science student. So in that particular software, it is similar to Excel. It's similarity to near about the Excel. Only 2 window is different. One is the data view and another is the variable view. How to functioning it, I will discuss it. How to insert the questionnaire, how to insert the data. Suppose we are the social sciences student or we are the social sciences research. So we have to challenge how to insert the questionnaire. And we are the suppose physics, chemistry, or other science, life sciences student. How to insert the data. We have to conduct the experiment. And we will conduct the experiment, then we generate the data. How to insert the data in SPSS, how to code the data in SPSS, insert the variables, sort the data, select the cases. Suppose there are 2 files. One is the Excel file, another also Excel file. One is the SPSS file, another is the Excel file. So how to merge the data files, recode the data, how to transform the data. Because why it is necessary? Because we have lots of data. That time, whenever we apply the statistical tools, then it is some constraint or some conditions will be there, some assumptions will be there. If whenever we apply the parametric test or non-parametric test, that type transformation is the very important. Suppose we have to quantitative data. This quantitative data converted into qualitative data, or sometimes qualitative data is converted to quantitative. That time we have to transform the data. Command is the very important. Then last is the how to take the graphs in SPSS, how to create the frequency table, how to summarize the data. All the things are covered in this session. And last is we are the researchers. Firstly, researchers, there are third step is we take the hypothesis or objective of the study. That time we have to test the
hypothesis, how to test, which statistical tools is appropriate is our data. All that things are covered in the today's sessions. First sessions, it is the theoretical part. Second session, I will conduct the hands-on training or experiment practical sessions. So how to function, how to use the spaces. Okay. So friends, first is my point is what is the statistics? We are familiar with the statistics. Everybody is familiar with the statistics. Statistics means what? It is the data, collection of the data. How to collect the data? First is the survey. Survey means we have to design the questionnaire, then we have to collect go to the market or our related field work, and then we have to collect the data. And this is the for example, it's the survey. This is the source of the data. Another source of the data is the conduct the experiment and write down the readings of the experiment. This is also data. Then whenever we collect the data, the visualization purpose or presenting the data, it is very important. It is known as the charts and tabular of the data. This raw data is converted into tabular form as well as charts. It is known as the presentation of the data. Why it is necessary to presenting the data? It is easy to understand. It is easy to understand purpose. Our raw data is converted into charts form or tabular form. Then third is the characteristics of the data. Suppose whenever we find out we have to raw data, it is quantitative or qualitative data. Right? There are two types of the data, quantitative data or qualitative. Quantitative data is there. Then that data we have to find out the average, standard deviation, mean deviations. It is the characteristics of the data. And collection of the data, presentation of the data, characteristics of the data, it is known as find out the characteristics of the data. It is known as the data analysis. Right? It is known as the data analysis. Why it is necessary? Why data analysis is necessary? Because we get the proper decisions. Because we get the proper decision in minimum time, in minimum data. So this is the fundamental of the statistics. So the second is what is the actual definition of the statistics? See, what is the definition? Statistics is the branch of science deals with study of collection of the data. First word is the collection of the data. Second is the tabulation of the data. Third is the collection, tabulation, representation of the data, means visual representation of the data, then analysis of the data, and interpretation of the data. This is the 5 words are the important in the statistical definition. First is the data, collection of the data. What is the data? Data means what? Data means it is the informations. Data means it is the information. So which type of information is there? It is the qualitative information. It is the quantitative informations. Recently, roll number 14 is introduced myself. The Jadhav sir, Om Prakash Jadhav, he's published, this is paper, he's published, there are 2 books. There are 15-year teaching experience. What is this? This is the informations. And in this information, there are 2 types of the data. One is the quantitative data, another is the qualitative data.
So data, whenever we have to collect the data, then second is the tabulation of the data. Tabulation of the data. Tabulation means the raw data is converted into table form. The systematic arrangement of the raw data in row wise as well as column wise. Why it is necessary? Because it is easy to understand. Raw data is converted to the representation purpose, tabular tabulation form. After the tabulating the data, visualization is the important. Our presentation, our charts, our graph is the important. Right? We draw the charts or graphs of the data. Then analysis of the data. Right? Analysis of the data. Analysis, when to analyze the data? We have raw data. This data is qualitative or quantitative. And what is our purpose? What is your objective? What is your hypothesis? The analysis is depend upon our objectives as well as our hypothesis. So parametric tests, non-parametric tests will be there. So many tests. And then last is the interpretation of the data. These are the correct definition of the statistics is the branch of science, the study of collection of the data, tabulation of the data, representation of the data, analysis of the data, and interpretation of the data. It is known as the statistics. Okay, we are the researchers. हम सभी अभी researcher हैं. So, what is the role of the statistics in your research? There are 7 steps in the research. है ना, हम जब भी research करते हैं, in some book, so many steps, but the main steps are the 7 in the research. So, what is the first step in the research? Define research problems. हम गाइड के पास जाते हैं यार, स्टूडेंट अपने पास आते हैं, sir, what is the research problem? Firstly is define the research problem. The second step is the review concepts and theories. Review concept and theories or review of the literature, review previous research findings. हम बोलते हैं ना review कर दो, review, right? Review of the research. Then third step is the formulation. This 7 step is the correlated to each other. If you want the quality research, then this step is correlated to each other. Okay. Then third step is the formulate the hypothesis. Before formulation, we set our objectives. See how to set the hypothesis, how to decide the objective, how many objectives I have to consider in our research problem, how much hypothesis we have to consider in our research. It is depend, objective is depend upon your research title. आपका जो कुछ भी objective है, वही all objective is depend upon our research title, research area. आपके ऊपर है कितना deep में लेना चाहिए, क्या नहीं है. It is the independent, but it is depend upon our research title. But hypothesis is that depend upon your research objectives. बहुत सारे research student मेरे पास आते हैं, sir, analyze the data. We have this questionnaire, and this is my hypothesis, and this is my objective, and this is my data. Please analyze it. हम वहां पे देखते हैं कि there are 3 objectives और 5 hypotheses. 3 objectives है और 5 hypotheses. It is the wrong. Hypothesis, objective is depend upon your research problem. Hypothesis is depend upon your research object.
Okay. So one mathematical formula is there. Hypothesis is less than or equal to objectives. अगर आपके पास सपोज देर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम 5 होना चाहिए, और उससे लेस है तो भी चलेगा, बट all objective is covered. But all objectives will be covered. अगर objective is less than hypothesis, it is not appropriate hypothesis, it is not a proper objectives. So means minimum hypothesis cover the maximum objectives. This is a simple step to setting the hypothesis. Hypothesis means what? It is the pre-assumptions of the research. Hypothesis means it is the pre-assumptions of the research. There are two types of the hypothesis. One is the null hypothesis, another is the alternative hypothesis. I will talk in detail how to set the hypothesis, how to set the null hypothesis and alternative hypothesis. After, see again, hypothesis depend upon our objectives. Then next step is the design the research. In this design of the research, what is the included in there? First is the, whenever we set the hypothesis, we design the questionnaire on the basis of our hypothesis. What happened? Again, some student is collect the data. After collecting the data, अगर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, so many student came and tell me, sir, analyze the data. वहां पे देखते हैं कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो क्वेश्चनियर और वो हाइपोथेसिस का कुछ भी रिलेशन नहीं होता है. देन व्हाट? अगर आप डेटा 90% डेटा आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया है, और फील्ड वर्क से क्वेश्चनियर डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास आते कि एनालाइज द डेटा, और आप हमें सपोर्ट कर दो सर. अब मैं देखता हूं कौन सी टूल्स यूज होती है. तो क्वेश्चनियर और वो हाइपोथेसिस का कुछ भी रिलेशन नहीं होता है. तो हाउ टू एनालाइज इट? मेरे सामने देर आर टू ऑप्शंस. वन इज द व्हाट? एक तो क्वेश्चनियर चेंज करो हाइपोथेसिस बेस पे, एंड देन अगेन द कलेक्ट द डेटा. अदरवाइज क्या होता है? जो डेटा है एग्जिस्टिंग, जो कुछ भी कलेक्ट किया हुआ है, वही ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी सेट द हाइपोथेसिस. लेकिन जो सेकेंड स्टेप वो गलत है. उसके वास्ते हमें डिजाइन द क्वेश्चनियर इज द इम्पोर्टेंट. डिजाइन द क्वेश्चनियर. हाउ टू डिजाइन द क्वेश्चनियर, दिस इज अनदर सेशन. But again, hypothesis, a questionnaire is depend upon our hypothesis. Minimum questions cover the maximum hypothesis. हम ऐसा नहीं बोलते कि डू नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना. वहां पे आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चनियर डिजाइन होनी चाहिए. डिजाइन ऑफ रिसर्च में आपकी सैंपल साइज यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए, and which sampling is appropriate in my research. Probabilistic sampling is appropriate or non-probabilistic sampling is appropriate. डिजाइन पे फिर सैंपल कौन सा लेना चाहिए, सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए, है ना. क्वेश्चनियर किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, ये पूरा जो कुछ भी है रिसर्च प्रॉपर में डिजाइन ऑफ द रिसर्च में आता है. Then next step is the, whenever we, this step, fourth step again depend upon the step third. And then
when we design the we decide the sample size, we design the questionnaire, कौन सी सैम्पलिंग लेना चाहिए, all is decided in step number 4. Then we will go to the field work for collecting the data. Then we will go to the field work. हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करने के वास्ते हम फील्ड वर्क करते हैं, collecting the data, right? After collecting the data, questionnaire is the primary source of the data. Sometimes in sciences student, we have to conduct the experiment. We have to conduct the experiment. हम experiment conduct करते हैं, वहां से data generate होता है, right? Then we will go to the analysis the data. Analysis the data. अगर यहाँ पे analysis of the data जो कुछ भी होता है, सो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते कि सर मुझे एनालिसिस करके दे दो, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के दे दो. इट इज नॉट नेसेसरी एवरीबडी टू अप्लाई द statistical tools. We have to apply the simple statistical tools. हम वहां पे हर जगह काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन अप्लाई करना ही चाहिए. ऐसा ही इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा, इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द डेटा. तो वहां पे मैं बोलता अगर आप कंसिस्टेंसी चेक करनी है, जैसा इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, यहाँ पर रेनफॉल का किस तरह से चालू है, कल प्रीवियस डेटा ले लिया है, सपोज आप 10-15 साल का डेटा लिया है, कंसिस्टेंसी कहाँ पे है, हर साल बारिश कंसिस्टेंट कहाँ पे होता है, वो चेक करने के वास्ते वो did not use the statistics. We have to use the only CV, coefficient of variations, और मीन स्टैंडर्ड डिविएशन से ही हमें पता चलता है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है क्या नहीं. लेकिन बहुत सारे रिसर्च की यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई द सम स्टैटिस्टिकल टूल्स. इट इज नॉट नेसेसरी. देन द एनालिसिस इज द statistics is classified into two parts. One is the descriptive statistics, another is the inference of statistics. Okay, so we analyze the data, then last is the interpretation and report writing. Interpretation of the data and report writing is the important. These are the 7 steps in our research process. These are the 7 steps in our research. आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे स्टैटिस्टिक का रोल, मैं रिसर्च प्रोसेस आपको डिटेल से बताया है, कहां से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है. एनीबॉडी गिव मी आंसर. व्हाट विच स्टेप इज इंपॉर्टेंट इन आवर रिसर्च? एज पर माय opinion, the statistics will start on step number 3. Formulate the hypothesis से statistics start होता है. Okay, then hypothesis जब start होता है तभी हमें statistics यूज होता है. लेकिन हम बहुत सारे रिसर्चर क्या होता है, statistics ओनली एनालिसिस के पर्पज से, कुछ तो मीन मोड मीडियन, उसके वास्ते ये पूरा आपका रिसर्च क्वालिटी रिसर्च नहीं. व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द रिसर्च? तो मैं ये बोलता जैसे हम खाना खाते हैं, सॉल्ट का रोल जिस तरह से होता है, सॉल्ट आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन टेस्ट देता है, उसी तरह से हमें रिसर्च में आपको स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अच्छा रिसर्च करना होता है, आपको स्कोपस जर्नल में आपको अगर रिसर्च कर पेपर पब्लिश करना है या पेटेंट करना है, स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल रोल इज द इम्पोर्टेंट. तो मैं ये जो कुछ भी 7 प्रोसेस है, 7 स्टेप्स है, जो कुछ भी 100% तो ये हमें 60-70% आपके रिसर्च में आपको स्टैटिस्टिकल यूज होता है. लेकिन हम ओनली 10-15%, 10-15% हम स्टैटिस्टिक यूज होते हैं. उसके वास्ते अपना क्वालिटी रिसर्च
क्वालिटी रिसर्च पेपर भी हम बना नहीं सकते। उसके वास्ते सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल्स है अपने पास, जैसा मीन है, मीन निकाला बोल तो क्या होगा? When we use the chi-square test, when to use the chi-square test? What is the assumptions of the chi-square test? When to use the ANOVA? When to use the t-test? It is the important role in your point. What is the actually? What is the statistics? Statistics means what? Suppose we have data. Data means it is the informations, right? Data. We have quantitative data or qualitative data. Then when we have raw data, we apply the statistical tools in raw data. Then we get the proper informations. This is the role of the statistics in our research. We have data in social sciences student, we have to collect the data. In science student, we have to conduct the experiment, and raw data is there. Then we have to apply the statistical tools. It is the descriptive statistical tools or inferential statistical tools. Then we get the proper informations. This is the role of the statistics. So after basic statistics, so statistics means statistics means the data. The how many types of the data? So there are means it is the variables. How many types of the variables? How many types of the data? Only there are two types of the data. First is the qualitative data, another is the quantitative data. What is the qualitative data? हम qualitative किसे कहते हैं? Qualitative data means what? And what is the quantitative data? सर देखो उसके नाम पे ही qualitative, quality of the lecture, quality of the food. हम किस तरह से quality of the food, it is good or bad? ये measurable form में है क्या? नहीं. It is the categorical form of the data. It is the categorical types of the data. Like brand of the PC, कौन से कंपनी का पीसी है ना? Color of the hair, red, black, white, like this. There's a male or gender, male or female. It is the qualitative data. Another is the quantitative data, जहां पे मेजरमेंट होते हैं. कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे क्वांटिटेटिव डेटा. जैसा हाइट ऑफ द पर्सन इन सेंटीमीटर यूनिट हम लगाते हैं. हाइट, वेट, और सपोज सम वी हैव टू कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट इन साइंस ट्यूटर. कुछ तो कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके हम मेजरमेंट करते हैं. सम न्यूमेरिकल डेटा विल बी देयर. It is known as the quantitative data. Quantitative is the also classified into two types. One is the descriptive, another is the continuous quantitative data. Okay. Types of the variables are the types of the data we have to see. Okay, one is the qualitative, another is the quantitative form of the data. So friends, what is the nominal data? What is the ordinal data? Interval data and ratio data. Basically, these are the types of the qualitative data and quantitative. It is the types of the variables, or it is the types of qualitative data and quantitative. Qualitative data means it is the categorical form of the data. These qualitative data are classified into two parts. One is the nominal data, another is the ordinal data. Qualitative data is classified into two parts. One is the nominal data, another is the ordinal data. हम ये क्यों बताना चाहते हैं? अगर आपको डेटा का नेचर पता चलता है, वेरिएबल किस तरह के हैं और डेटा किस तरह का है, तो
बहुत इजी है स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने। अगर आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और इंटरवल रेशियो डेटा होता है तो मुझे पता चलता है कि पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होना चाहिए या नॉन पैरामीट्रिक। आपको ओनली मीन कौन से डेटा का निकाल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, ये सब इट इज डिपेंड अपॉन विच स्टैटिस्टिकल टूल्स इज अप्रोप्रिएट। इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स और द नेचर ऑफ द डेटा। तो मैं वही बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज classified into two parts. One is the nominal data and ordinal data. Nominal data means only like name of the person, है ना, क्वेश्चन में होता है name of the drugs, right? This is the nominal data, only name रहता है, name। नॉमिनल डेटा जिस तरह से है कि नॉमिनल डेटा में जैसा एजुकेशन, जेंडर, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, राइट, दीज आर द नॉमिनल डेटा। रिलीजन्स है, दीज आर द नॉमिनल। ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा आल्सो अ नॉमिनल डेटा। Ordinal data is also nominal data, but order must be there, है ना। जो कुछ भी ऑरिजिनल डेटा है वही नॉमिनल डेटा ही होता है, लेकिन वहां पे आपका जो कुछ भी नॉमिनल डेटा है उसमें ऑर्डर होना इंपॉर्टेंट है। जैसा एजुकेशन, एजुकेशन में हम क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं क्या हम कि मेरी पीएचडी हो गई, बाद में पीएचडी, एचएससी, नेट सेट, पीजी, ऐसा लगता है। नो, ऑर्डर बस प्राइमरी एजुकेशन, secondary education, higher secondary, then UG, then PG. This data is nominal, but order must be there. These are the original data. Also, rank number 1, 2, 3, 4, order will be there. It is the ordinal. Name, it is the ordinal. Ordinal means order must be there. But which type of order? It is nominal data order must be there. These two are the qualitative types. These two are the qualitative types: nominal data, ordinal data. Another types of the variables are quantitative form. Previously, we have to see here. This is the qualitative data classified into two types. One is the nominal data, second is the ordinal data, and another is the quantitative. Variables are quantitative data. Quantitative data is also classified into two parts. One is the interval data and second is the ratio data. For example, age, interval data, interval must be there. Age, weight, age, unit, we have to use unit. यहाँ पे हम यूनिट लगाते हैं, जैसा एज है, कितने साल होगा, तो उम्र क्या है, एज 17 ईयर, 25 years, years, this is the unit. Weights, weight जो होता है वो किलोग्राम पे होता है ना, अपॉन में होता है weights. इनकम इन रुपीस, और ये जो कुछ भी है इट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द डेटा। ये जो कुछ भी है इट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द डेटा, इंटरवल डेटा। रेशियो डेटा, रेशियो डेटा हम किस तरह से, आउट ऑफ 100 वी गेट द 18 मार्क्स, है ना। दिस इज द रेशियो, मेजर्स ऑफ फिजिकल डायमेंशन सच एज वेट, हाइट, 10 में से इतने लोगों को इतने मार्क मिलेंगे, राइट। दिस इज द रेशियो फॉर्म ऑफ द डेटा। ये जो कुछ भी दो, जो देर आर टू टाइप्स, वन इज द इंटरवल एंड अनदर द रेशियो। दिस आर द टाइप्स ऑफ द क्वांटिटेटिव। ये जो कुछ भी है ये है क्वांटिटी के टाइप्स है, ओके। सो हमें ओनली टू टाइप्स ऑफ द डेटा है क्या, हम आज तक क्या बोलते हैं, देयर आर डेटा मींस इट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस तरह की, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, वन इज द क्वालिटेटिव
अनदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अभी जो रिसेंट हम डिजिटल इंडिया बताते हैं, बहुत सारा जो रिसर्च होता है वहां पे अभी सोशल मीडिया आ गई, डिजिटल इंडिया हम बोलते हैं, है ना। वहां पे जो डेटा यूज होता है, इट इज द बिग डेटा। व्हाट इज द बिग डेटा? Big data is depend upon the big data or large data, both are same? No. Large is the quantity, qualitative data is the large data हो सकता है, लेकिन big data equal to large data ये ऐसा हो नहीं सकता है। What is the big data? Big data is depend upon three V. Three V means V cube. V cube. V. Right. First V is the volume of the data. Volume of the data. The volume of the data means what? The size of the data. Data की कितनी साइज है? हम 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर देखते हैं, कोई तो रिसर्च पेपर में छोटे छोटे टेबल्स आते थे, वो वही साइज काउंटेबल डेटा रहता था। अभी इनफाइनाइट डेटा, डेटा इज द इनफाइनाइट। व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द डेटा। Second, velocity of the data, and third is the variety of the data। तो वेलोसिटी, जो साइज है उसकी स्पीड किस तरह, जो कुछ भी साइज जनरेट हो रही है उसकी स्पीड क्या है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द डेटा क्या है? तो किस तरह से डेटा जनरेट, विद इन सेकेंड, विद इन मंथ, विद इन डे, उसकी स्पीड किस तरह से डेटा जनरेट होता है। गूगल वैल्यू में फर्स्ट टाइम ये डेफिनेशन किया है कि वी क्यूब में, लेकिन आप V10 V15 कुछ भी लगाते हैं लोग, लेकिन बेसिक वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी ऑफ द डेटा। वेलोसिटी मीन्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द डेटा, एंड थर्ड इज द वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा। वैरायटी मीन्स, तो डेटा इज द विच टाइप ऑफ वैरायटी? वैरायटी इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा इज द वन वैरायटी। हम अभी एक दूसरे को चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, अभी जो मैं इंफॉर्मेशन देता है, दिस इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। व्यतिरिक्त वीडियोस मैसेजिंग हो रही, ऑडियोज मैसेजिंग होती है, टेक्स्ट मैसेजिंग होती है, इमेज मैसेजिंग होती है ना। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को चैट करते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द वेरियस वैरायटी ऑफ द डेटा। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा वो तो है न्यूमेरिकल डेटा, और जैसा हमने बताया नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल डेटा। इट इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। Means big data, it is the structure and unstructured form of the data. The structure form of the variety of the data means it is the structure and unstructured form of the data. What is the structure form of the data? जैसा structure means qualitative and quantitative data is the structure form of the data. Only qualitative data, it is the structure. Quantitative data, it is the structure. Unstructured means, unstructured form of the data means it is the images, audios, है ना। हम थंब लगाते थे, कोई अगर न्यूज यूट्यूब पे ये हम थंब लगाते हैं, कई मैसेज ले, इट इज द मिक्स audios with unstructured form of the data। एंड इफ जो कुछ भी डेटा होता है, अगर ये तीन भी सेटिस्फाई होता है, उसे हम बिग डेटा कहते हैं। And we are the researchers। अभी so many social media, Facebook, WhatsApp, जो कुछ भी है, या इंस्टाग्राम्स, ये जो कुछ भी है सोशल मीडिया, यहाँ पे जो डेटा जनरेट होता है, इट इज द बिग डेटा। व्हाट? इट इज द बिग डेटा होता है। एंड वी हैव टू चैलेंज, वी आर द रिसर्चर, एंड वी हैव टू चैलेंज टू हाउ टू analyze the such type of data, how to analyze the such huge data mining and where big data mining and warehousing, ये नया कंसेप्ट है डेटा माइनिंग। माइन मीन्स कोयले की खान रहते हैं, वहां से माइन करके हम प्रॉपर गोल्ड निकालते हैं। उसी तरह अभी अपने पास डेटा की
स्टोरेज होता है, बहुत सारे स्टोरेजेस है, इंफॉर्मेशन इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें माइंड करके वहां पे कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इट इज नोन एज द डेटा माइनिंग कंसेप्ट, राइट। और हम बताते हैं कि दिस इज द, अभी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग टूल्स, व्हाट इज द डेटा साइंस? This image, see, what is this? This is a very, what is the data science? Everybody is talking about data science. हम क्या कर रहे हैं? डेटा साइंस में बहुत सारे जॉब्स है, एआई में बहुत सारे जॉब जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इफ यू हैव टू प्रॉपर नॉलेज, कौन सा ही सब्जेक्ट, प्रॉपर टूल्स, एडवांस टूल्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट इज द डेटा साइंस? अब मार्केट में हर एक बोलता है कि मुझे डेटा साइंस करना चाहिए, डेटा साइंस, व्हाट इज द डेटा साइंस? स्टैटिस्टिक्स is the father of data science. Computer science is the mother of data science. और जो कुछ भी डेटे का साइंस है और जो नया है ना, मम्मी पापा से मिलके जो तैयार हो गया, वो होता है डेटा साइंस, राइट। तो फर्स्टली फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज द फादर ऑफ डेटा साइंस, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी टूल्स यूज होते हैं, विदाउट स्टैटिस्टिक्स हम प्रूव नहीं कर सकते। कंप्यूटर इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां पे हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक। देन हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, what is the source of the collecting the data, or collect source of the collect primary data as well as secondary data. And what is the primary data? Primary data means आप में से कोई तो बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द प्राइमरी डेटा? First hand information that we collect from the respondents. It's called a first hand information. Right. This is the primary data. Primary data means what? It is the first hand information. First hand information. जब हम जाते हैं, we have to design the questionnaire, then we will go to the fieldwork purpose for collecting the data. It is the primary data. What is the secondary data? This information is already available in offices, magazines or records, है ना, ये जो कुछ भी है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा हो, कहीं टाइम प्राइमरी डेटा होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी डेटा होता है। ओके, तो दिस इज द सेकेंडरी। हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा? Or method of collecting the primary data. So there are two methods to collecting the primary data. First is the experimental data. Second is the survey. Experiment means what? In science field, in science student, we have to conduct the experiment. And generate the data. Write down the experimental observations. And then we have to collect the data, conduct the experiment and collect the data. It is known as the experimental data. Then survey data. Survey means we have to design the questionnaire and collect the data. So survey, there are two types of the survey. One is the census. अभी हम जनगणना बोलते हैं वहां पर, सेंसस सर्वे इंडिया में हो रहा है, राइट। वो जो है ना पॉपुलेशन सेंसस, ओवरऑल पॉपुलेशन इज कवर्ड। एंड जो हम कमीशन में काम करते हैं, जो अभी रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है, वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, बेसिस। व्हाट इज द नीड ऑफ द सैंपल? सैंपल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। हमें क्यों सैंपल की जरूरत होती है? कम टाइम में, कम कॉस्ट में, है ना, मिनिमम मैन पावर, मिनिमम टाइम, हम अप्रोप्रिएट रिजल्ट देने के वास्ते हम सैंपलिंग यूज। सेंसस इज द कवर्ड ओवरऑल पॉपुलेशंस। ओके, देन नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द डेटा, types of the statistics. Statistics is classified into two types:
One is the descriptive statistics, another is the inference of statistics. So what is the descriptive statistics? Descriptive हम देखो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि एवरी टाइम हम बोलते कि स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाओ chi square. It is not necessary. Descriptive statistics is the very important also. It is depend upon the nature of the data, types of the data. So descriptive statistics involve collecting the data, presenting the data, characterizing the data. Data collect करना, graphical representations are tabular form और उसका mean, mode, median, like measure of central tendency and dispersion. It is the descriptive statistics. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पर्पस यही है कि डिस्क्राइब द डेटा. अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन क्या है, एग्जैक्टली क्या निकलना है डेटा से. डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज द मीन डिविएशन, व्हाट इज द वेरिएंस, है ना. वही होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिकल. लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर ऑल डेटा, है ना. हम बताते कि मेरी टू व्हीलर और कार इतना एवरेज देती है, सिंगल वैल्यू बताती है. लेकिन वो सिंगल वैल्यू बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करके हम ओनली वी हैव टू रिप्रेजेंट द वन सिंगल वैल्यू, लाइक मीन, मीडियन, मोड. इट इज द रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू. One representative value for all data is known as the central tendency, or it is known as the measure of central tendency. There are mean, mode, median. हम इतने से ज्यादा नहीं. There are so many method to find out the mean, median, and mode. Like simple mean, raw data, simple mean, ungrouped data, group data, all that things. It is, but it is the representation of the data. See, this is the one simple example, है ना. हम बहुत सारे जगह ऐसा बताते हैं कि मुझे डिस्पर्शन का यूज मालूम नहीं है. दीज आर द बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. दीज आर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. dispersion or variation of the data from the central tendency. हम firstly what is the dispersions, हमारा सेंट्रल डेटा से ओवरऑल डेटा जो कुछ भी है उसका मीन से डेटा कैसा स्प्रेड हो रहा है ना. उसके वास्ते हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस सीखते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्शन रिसर्च में यूज करते हैं. राइट. स्मॉल डिस्पर्शन, अगर मीन से, मीन सपोज लो मीन 9 आ रहा है और उसका डिस्पर्शन सर एक वैल्यू है, सो मेनी वैल्यूज. मीन और डिस्पर्शन जितना नजीक होता है वो डेटा इज द रिलायबल डेटा. The quality is good of the data. Small dispersion indicate high uniformity of the atoms. While large dispersion, मीन और डिस्पर्शन में बहुत सारा है, डिफरेंस है. जैसा ये डेटा में देखिए हम बताते हैं. while the large dispersion indicate the less important, मीन से डेटा बहुत सारा स्प्रेड होता है तो इट इज द less informality of the data. For example, हम अभी यहाँ पे क्या लिया, we have to consider student 1 and student, like we have to consider, हम क्रिकेट के बारे में बताते हैं. सपोज दिस द क्रिकेट प्लेयर, सपोज ओल्ड क्रिकेट प्लेयर इज द्रविड, राहुल द्रविड और सचिन तेंदुलकर. ये जो है ना 5 मैचेस खेलते सब. द फर्स्ट मैच में द्रविड निकाला है 68, लेकिन तेंदुलकर इज 85, द्रविड 75, सेम मैच 90 तेंदुलकर, है ना. इस तरह से 5 मैचेस सेम मैचेस है
अगर ये डेटा का हम दोनों सेम मैचेस है, ऑब्जर्वेशंस आर 5, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी सम सेम है दोनों की 345, जब सेम मीन होती है उसका और सेम ऑब्जर्वेशन होता है, मीन इज ऑल्सो सेम, और इस इट्स मीन इज 69, विच इज द कंसिस्टेंट बैट्समैन, विच इज द बेस्ट बैट्समैन, है ना। हमें नेक्स्ट सिलेक्शन कमिटी का और पूछा तो परफॉर्मेंस ऑफ देयर आर 5 मैचेस इज देयर, द सम ऑफ द 5 मैचेस आर एवरेज और से द विच इज द बेस्ट बेस्ट बैट्समैन। तो मीन से इसकी मीन है 69, 69 के नजीक ऑल द वैल्यूज इज देयर, the 69 is the central value, the remaining values are same. Here, like 69, it is very large, is 25, away from the mean. Like 90, it is away from the mean. Now, which is the consistency? The first player means Dravid is the consistent batsman. Similar, ये हम जिस तरह से एनालिसिस करते हैं उसी तरह से अपने रिसर्च में, जैसा रेनफॉल होता है, इनकम टैक्स का कुछ आप पास डेटा है, कंसिस्टेंसी इनकम टैक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन सा तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बट वी वांट क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ द डेटा, दैट टाइम वी हैव टू यूज द सीवी व्हिच इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ variations. These are the formula. Like CV formula is, what is the S stand for standard deviations, X bar stand for the mean into 100, then we get the CV. Like use of the coefficient of variations, it is used for the comparison of variability, stability, uniformity and consistency. अगर आपको ये 4 वर्ड चेक करना है, that is only simple. यहाँ पे कुछ statistical hypothesis testing करने की जरूरत नहीं, simple static. We have to find out the standard deviation divided by mean into 100. उसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अगर चेक करना है तो वी हैव टू यूज द व्हाट सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आया शॉप में यहाँ पे, और रिसर्चर के डिपेंड अपॉन द रिसर्चर, टाइप्स ऑफ द डेटा, पर्पस ऑफ द डेटा, उसके ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जर द सीवी, अगर सीवी लार्ज होता है, लार्जर इज द वेरिएशंस। अगर लार्जर सीवी होता है, सीवी लार्ज मिलता है, तो व्हाट इज योर रिप्यूटेशन डेटा में, या क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, पुअर क्वालिटी है, इज द वेरिएशन, एंड पुअर इज द क्वालिटी। वेरिएशन ज्यादा आता है, बोलते हैं ना, लार्जर द सीवी, वेरिएशंस, पुअर इज द क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इवन फॉर द मेड इम्प्रूव। अगर यहाँ पे अगर वाइस वर्सा हम देखें, सीवी इज वेरी स्मॉल, अगर सीवी आपके बहुत कम आती है तो हम बोलते हैं कि वहां पे क्वालिटी इज गुड, यूनिफॉर्मिलिटी इज देयर, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट स्टेबल है, कंसिस्टेंसी है ना, इस तरह से इट डिपेंड अपॉन द सीवी। देन हर एक इसका ऊपर डिपेंड होता है। सीवी इज द इंपॉर्टेंट रोल इन द, these are the descriptive statistics. हम हर जगह इन्फ्रेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन also we have to find out the correlations. Okay, the second types of the statistics is the inferential statistics or inference of the statistics. Yeah, when to use the inference of statistics involves estimation, मुझे estimation निकालने का है कि ये वैल्यू इतनी है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होता है, प्रोजेक्शन निकालना है ना, एस्टिमेशन निकालना है, हाइपोथेसिस लगा के, हाइपोथेसिस द प्री अजम्पशंस ऑफ द रिसर्च, हाइपोथेसिस लगाना, देन वी हैव टू यूज द पर्पस मींस आपको कुछ भी हाइपोथेसिस लगाना है, एस्टिमेशन निकालना है ना,
So that time we have to use the inference of statistics. Purpose make the decision about the population. हम बताते हैं कि on the basis of sample, sample is the representation of the population. On the basis of data, we have to collect the data. लेकिन जो sample होता है वो population को represent करता है ना? हम जो कुछ भी सर्वे करते हैं और वो सर्वे करके हम बताते हैं कि पॉपुलेशन इस तरह से पूरा पॉपुलेशन है। जैसा हम अभी 2 साल पहले हमने स्टेट बैकवर्ड कमीशन में हमने डेटा कलेक्ट किया था कि मराठा लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं इन महाराष्ट्र। तो व्हाट इज द प्रोसेस? वी हैड टू डिजाइन द क्वेश्चन, सेट द हाइपोथेसिस। कमीशन के कई रूल्स होते हैं। कौन सी कमीशन वो कम्युनिटी का अगर रिजर्वेशन देना है, सम रूल्स इज देयर। वी हैव टू चेक द सोशल एजुकेशन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। उसके वास्ते वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव, देन हाइपोथेसिस, देन डिजाइन द क्वेश्चनियर एंड कलेक्ट द डेटा। यानी हमने वो टाइम पे हमें इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत जगह यूज किए थे। And then we decide, yes, social, education, economical backward particular community है क्या नहीं, on the basis of evidence as well as data. We have to conduct the experiment, conduct the survey, and collect the information and check the social, education, and economical backwardness of the particular community. Then commission decide it is necessary if our hypothesis is accepted or rejected, right? हम वहां पे क्या है, सैंपल बेस पे वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, लेकिन पूरा पॉपुलेशन का डिसीजन देते हैं कि यस दिस कम्युनिटी इज सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, है ना? इस तरह से वी हैव टू कंडक्ट द सम साइंस experiment, and then we decide what is the quality of the particular experiment, quality of the particular matter like this, or chemicals, right? So these are the basic statistical tools, or these are the inference of statistics. Then we will start the correlations. Then we will start the correlations. Correlation is the important role in the research. These correlation is the qualitative correlations or quantitative correlations. But qualitative correlation data must be qualitative or sometimes quantitative. So what is the correlation? Co means in statistics or any field, co means there are two. The relationship between two variables, it is known as the correlation. Correlation. यहाँ पे एक वेरिएबल हमें यूज नहीं करना चाहिए. Co means two. The two variable must be. The correlation is the statistical technique used to determine the degree to which two variables are related. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कहीं एसोसिएशन दिखाना है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी है क्या एक दो वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल्स के ऊपर, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द correlations, the relationship between two variables. So another in correlation is one value is independent, another value is the dependent. If the change the one variables affect the change in the other variable, the variable are said correlations, है ना? जैसे हाइट एंड वेट, बच्चों का अगर डेटा लेते हैं हम, जिस बच्चे की हाइट चेंज होती है उसका वेट भी चेंज ऑटोमेटिकली होता है. अगर कई लोगों की वेट चेंज होती है बच्चों की, उसकी हाइट पे ऊपर इफेक्ट होता है. मीन्स इट इज द correlations, the relationship between two variables. One variables is changed, another variables is automatically changes. It is dependent and independent variables, right? So this relationship, such type of relationship, it is known as the correlations.
Okay. Another concept is the what is the simple correlation and what is the multiple correlation. When only two variables are involved, the correlation is termed as simple correlation. Only two, like height and weight. Height is change, automatically weight is change. It is known as the simple correlation. Agar if more than two variables are involved, the correlation is known as multiple correlation. एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा इंडियन इनकम, अगर किसका भी इनकम है, सो मेनी वेरिएबल्स इज देयर. इनकम अगर किसका निकालने को, टोटल इनकम इज डिपेंड अपॉन सो मेनी का, फ्लैट की प्राइस और कौन सी प्रोडक्ट की प्राइस, quality of the project depend upon so many variables. So it is the multiple correlations. Like this, the correlation is, it is a scattered diagram, like it is the pair of the x and y axis. For example, suppose this is the x variable, कुछ तो x variable है, आपने पास y variable. ये दोनों का कुछ रिलेशन है क्या? We have to take the diagram. In this diagram, it is known as the scattered diagram. X axis is there, y axis is there. We draw the diagrams. It is known as the scattered diagram, and it is very useful for identify the nature of the data. It is positive correlation or it is the negative correlations. These are the characteristics, or these are the basic points of the correlation coefficient is used. Correlation coefficient means it's the correlation. Coefficient means some values will be there. It is the correlation of coefficient. Correlation coefficient is used to measure the degree of association. हम यहाँ पे क्या मेजर होता है कि क्या x और y का कुछ रिलेशनशिप है तो कितना है, हाउ मच रिलेशनशिप इज देयर. It is usually denoted by R. The value of R lies between positive and negative. One correlation lies between -1 to +1 में रहता है. अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो वहां पे +1 आएगा. परफेक्ट -1 आता है उसका आंसर, तो हम बोलते कि नेगेटिव. व्हाट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है वो हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. Positive value of R indicate the positive correlation between two variables. हाँ यस, एक वैल्यू जो कुछ भी इंक्रीज होती है, दूसरी वैल्यू वहां पे इंक्रीज होती है 100%, है ना. तो इट इज द पॉजिटिव. व्हाट इज द R नेगेटिव कोरिलेशन, एक वैल्यू इंक्रीज होती है, अनदर वैल्यू इज डिक्रीज, इट इज द नेगेटिव कोरिलेशन. अगर R जो कुछ भी वैल्यू मिलती है, परफेक्ट 1 मिलता है, इम्प्लाइज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं हम. अगर -1 मिलता है तो उसे हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अगर 0 और 0 के आजू बाजू में वैल्यू मिलती है तो हम बोलते हैं कि वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है. राइट हाँ. डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन. Direction of the correlation, one is the positive correlation, or it is known as the positive correlation or negative correlation. Positive relationship means it is the positive. What is the positive correlation? One values is increases, automatically increase another value, or these values is decreases, another value is also decreases. Both two variables are increases or both variables are decreases, but these two variables are correlated to each other. अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज होती है, दोनों वैल्यू डिक्रीज होती है, then we say it is the positive correlation. Right? X increases, Y is also increases. X decreases, Y is also decreases. Like height increases, so those weights is also increases. This is the example of the positive correlation. Negative correlation,
One value is increase, another value is vice versa. One value is increases, another value is decreases. So it is known as the negative relation. Negative correlation होता है. जैसा x is increases, y is decreases, or vice versa. X is decreases, y is the increases. This is the example. The TV time is increasing. हाँ, अगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा टीवी देखते हैं तो ग्रेड क्या होता है उसका डिक्रीज होता है. Like this, these are the so many examples in our real life, positive and negative correlations. Like positive relationship, water consumption and temperature. ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ने ही वाला है. स्टडी टाइम एंड ग्रेड्स, प्राइस एंड डिमांड. These are the visualization purpose, like types of the correlation. Like x increases, y tends to be also increase, is the positive correlations. यहां पे देखिए क्या होता है, x is increases, y tends to decreases. This is the negative correlation. Like this diagram किस तरह का है? It is the no correlation, increase or decrease भी कई जगह increase है लेकिन near about its value is near about 0. So it is no correlation between this. What is this? This is the non-linear curve. Curve form में आता है. It is the non-linear correlations. Okay. This is the simple formula. फार्मूला का यूज ज्यादा नहीं है. जब हम ये फार्मूले से हम अभी like these are this diagram, it is known as the scatter diagram. What is the use of the scatter diagram? The scatter diagram, when we have to identify the trace of the data, which type of relationship is there. So we have to, this is the diagram. What is the interpretation? Yes, it is the positive correlation. What is this? Yes, it is also negative correlation. One value is increase, another value is increase. Here it is the negative correlation. What is this? This is the no correlation. But this is the non-linear trend of the data. Means these are the scatter diagram. What is the use of scatter diagram? The only one use of the scatter diagram to identify the trend of the data. हमें पता चलता है स्कैटर डायग्राम के ऊपर कि डेटा का ट्रेंड किस तरह से है, लेकिन परफेक्ट कितना कोरिलेशन है. हाँ यस, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे नॉन लीनियर आता है. लेकिन अभी मुझे पता है कि कितना रिलेशन है, तो हाउ मच रिलेशनशिप इज देयर, एक्स एंड वाई के अंदर कितना कोरिलेशन है, पॉजिटिव है तो कितना है. दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस फार्मूला एंड देन वी गेट द इंटरप्रेट. अगर कोई डेटा है उसका आर की वैल्यू मिलती है, लाइक आर इज द कोरिलेशन, वो किस तरह निकलता है वो अलग पार्ट है. लेकिन यहाँ पे देखिए आर इज +0.80 मिलता है आर की वैल्यू, देन वी से इट इज द पॉजिटिव रिलेशन. अगर ये जो वैल्यू थे तो सेंट्रल वैल्यू के इट इज नियर हर एक पॉइंट होता ही है. जितना ये सेंट्रल लाइन की नजीक वैल्यू होती है, इट इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर हर एक पॉइंट ये लाइन पे ही आता है, इट इज द परफेक्ट पॉजिटिव. हाइट एंड वेट का देखो यहाँ पे कैसा है, सेंट्रल लाइन से डेटा थोड़ा स्प्रेड हो गया तो आर इज लेस. ओके, आर इज लेस. यहां पे देखो राइट, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हर एक पॉइंट लाइन पे आता है, हर एक पॉइंट परफेक्ट, बट वन वैल्यू इज इंक्रीजेस. हम टीवी वॉचिंग पर वीक आवर्स आर इंक्रीज, एग्जाम स्कोर इज डिक्रीज. इट इज नेगेटिव फॉर द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ये फार्मूला अगर यहाँ पे है तो ये लाइन पे थोड़ा डेटा स्प्रेड होता है, इट इज द moderate negative correlations.
like this is the weak negative correlation. This is the weak negative correlations. यहाँ पे कुछ ट्रेन नहीं है. So it is the no correlations. कोई ट्रेन है क्या? नहीं है. वहां पे हम क्या बोलते हैं? It is the negative correlation of the data. How to find? यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेंगे. After 10 to 15 minutes, I will conduct next sessions. Okay. Any queries? Any doubts? यहाँ पे कुछ डाउट्स, कुछ क्यूरीज है तो बताइए. नेक्स्ट सेशन मैंने कंटिन्यू करने वाला हूँ. नेक्स्ट सेशन में ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेने, हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल सेशन, हाउ टू यूज द एसपीएसएस. एनी डाउट्स? यहाँ पे ब्रेक लेने वाले हम 10 to 15 मिनट का. यस सर, नो? हेलो.
आणि त्या आले तिकडे हेलो। जादव सर।
Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so let's start. This is the second session. So how to calculate the coefficient of correlation? It is not necessary for use because we have to use the softwares. हमें सॉफ्टवेयर के बेस से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके वास्ते थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम उसके वास्ते देर हो गई। सो सपोज वी हैव टू calculate the correlation of coefficient like such type of data, then मैं यहाँ पे ओनली ये बताना चाहता कि व्हाट इज आवर इंटरप्रिटेशन फार्मूला ये पूरा ये करके। सो व्हाट इज द 0.98 कि क्या होता है सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर इज द मशीन, हमें आउटपुट कुछ भी देते लेकिन व्हाट इज एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन इज द इम्पोर्टेंट। 0.986 means what? It is the strongly positive correlation because correlation is lies between -1 to +1. And this value is near about +1. Means it is the positive correlation. Positive correlation means what? Yes, X is increases, Y is also increases. If X is decreases, Y is also decreases. This is our interpretation. Like this. This is also example of the negative correlation. See, this is the diagram. Diagram is the represent the only what is the trend of the data. See, this trend is the negative trend because one value is increases, another value is decreases. Okay. So what is actual calculation is this. Whenever we apply this formula, then we get this value. Means what? Minus 0.83 means what is this is strong negative correlations because this value is near to -1, right? So these are the interpretations. So let's start our SPSS software. So in statistical, so many software packages is there. SAS is there, SPSS is there, Minitab, R, CStat, Statistica. Excel is also very good software. Python is also open source software. But today's sessions, I will talk about the SPSS. What is the SPSS? It is very easy to understand software. Okay. So this is the basic introduction of the SPSS. What is the SPSS? Its origin name is the Statistical Package for Social Sciences. Now current name is the Statistical Product and Service Solutions. This software is taken over the IBM company. Then after taking his name is changed, which is the Statistical Product and Service Solutions. Previous name is the Statistical Package for the Social Sciences. Okay, is one of the most popular statistical package, which can perform highly complex data manipulations and analyze with simple instructions. It is very useful for the researcher because it is very easy software. Like it is the Excel. हम एक्सेल पे जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन यहाँ पे आता है। टूल्स है, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स हम निकाल सकते हैं, एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स है, रिग्रेशंस है, अभी एडवांस एक्सेल में तो आ गए, फिर उससे ही अच्छा वर्जन और आउटपुट बहुत इजी और एक्यूरेसी यहाँ पे हमें मिलती है। और ये जो कुछ भी है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन हम जिस तरह से एक्सेल को देते हैं उसी तरह से यहाँ पे यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन आता होगा कि फिर एक्सेल क्यों यूज नहीं करना चाहिए, एसपीएसएस ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट टाइम
दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी यूजफुल और इजी टू अंडरस्टैंड। आपको अगर क्रॉस टेबल्स बनाना है, प्रॉपर वहां पे सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर आपको लेनी है, वही स्पेस एक्सेल में उतना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी जो स्टैटिस्टिकल लेवल पे मिलते हैं, जैसा 5%, 1%, विजुअलाइजेशन पर्पस, so many advantages of this software. Spaces for Windows is a computer package that will perform a wide variety of statistical procedure. यहाँ पे जो कुछ भी सॉफ्टवेयर है, यूजिंग द स्पेसेस वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, मेक द ग्राफ्स, परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हम यहाँ ये जो कुछ भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ग्राफ्स इजी हम निकाल सकते हैं। अनदर वे इज द स्टैटिस्टिकल टूल्स है। हमें यहाँ पे डेटा में कुछ एरर है का, कुछ डेटा अगर आपको एरर है, यहाँ पे डेटा तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो एनालिसिस होता है वहां पे उसका यूजेस भी नहीं होगा, तो फिर भी उसका परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। सो मेनी यूजेस ऑफ द दिस सॉफ्टवेयर। अगर क्वेश्चनियर डिजाइन करना है, बट क्वेश्चनियर इज गुड और नॉट, वी हैव टू चेक so many method to checking the questionnaire. Spaces can read different types of data. स्पेशल जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट फाइल्स भी रीड करता है। एक्सेल, अपने पास जो कुछ भी एक्सेल जो सीट है वो भी रीड करके अपने स्पेस से अंदर के करके क्रिएट कर सकता है। यू कैन ओपन द स्पेसेस फाइल इंडिविजुअल। जो स्पेसेस अगर हमें लगता है कि एक्सेल नहीं है, दूसरी फाइल नहीं है, तो वी हैव टू क्रिएट द स्पेसेस फाइल। We can create the new data set with spaces. We can edit, जैसा एक्सेल में हम edit, delete, है ना, उस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। Feature of the spaces, it is easy to learn and use. It includes full range of the data management system and editing tools है इसके अंदर। It provides in-depth statistical capabilities like control chart, design of experiments, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, राइट, लाइक रिग्रेशन के एडवांस टूल है, टाइम सीरीज के कुछ एडवांस टूल है, प्रोवाइड द इन डीप स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज। इट ऑफर्स कंप्लीट प्लॉटिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स। दीज आर द, लेट्स स्टार्ट अपॉन द स्पेसेस। हम स्पेसेस किस तरह से फंक्शनिंग करने वाले हैं, किस तरह से उसका विंडो रहता है। Let's start. But about two windows in spaces. हम अभी फर्स्ट क्या देखेंगे कि एक टू विंडो ऑफ स्पेसेस जो कि एक्सेल के अलावा, जैसे एज एक्सेल रहता है, लेकिन टू विंडो आर द डिफरेंट। देन वी विल डिस्कस द बेसिक ऑफ द मैनेजिंग द डेटा फाइल्स, हाउ टू मैनेज द डेटा। सो मेनी फाइल्स क्रिएटिंग है ना। हमने जब सर्वे जाते हैं, 5 इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वहां से डेटा आता है, तो हाउ टू मैनेज इट, फाइल्स एक फाइल में कैसा कन्वर्ट करना, उसमें से डेटा सॉर्ट कैसा करना, और टैबुलेशन किस तरह करके, हाउ टू मैनेज द डेटा फाइल्स। देन वी विल गो टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द SPSS. Okay, let about the two window in spaces. Like हम अगर spaces इंस्टॉल किस तरह से इंस्टॉल करने के बाद, हाउ टू ओपन द स्पेसेस, गो टू स्टार्ट, जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पीसी में है या लैपटॉप में, हाउ टू चेक इट, सिमिलर प्रोसेस इज देयर। गो टू द स्टार्ट, क्लिक द ऑल प्रोग्राम, क्लिक द SPSS लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे SPSS दिखाई देता है। तो देन अगर इस तरह से विंडो है तो वी से इट इज द SPSS विंडो इज देयर। यहाँ पे 16 है, कहीं 21 वर्जन होता है, इज एडवांस टूल, इट इज नॉट करेंटली द 39 टूल्स, 21 आर जो कुछ भी है ये। जब हम स्पेसेस को क्लिक करेंगे, देयर आर ओपन द, दिस इज व्हाट इज दिस इज द विंडो ऑफ द SPSS, दिस इज द विंडो ऑफ द SPSS। यहाँ पे अगर हम वी हैव टू क्लिक हियर, रन द ट्यूटोरियल, आपको कुछ हेल्प लगती है तो यहाँ से रन द ट्यूटोरियल,
टाइप्स ऑफ द डेटा के वास्ते इस तरह से करना चाहिए। ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स, मैक्सिमम टाइम ओपन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स। अगर स्पेसेस एग्जिस्ट का कोई फाइल है तो वी हैव टू क्लिक हियर एंड देन वी विल गो टू द यस। अगर आप क्लिक करने के बाद देन ओपन द सच टाइप ऑफ विंडो। दिस इज सिमिलर एज द एक्सेल। दिस इज द मेनू बार। दिस इज द मेनू बार। दिस इज, ये आपको किस तरह से लगेगा, सिमिलर एज अ एक्सेल। सिमिलर एज द एक्सेल जिस तरह से है उसी तरह से ये फाइल आपको दिखाई देती है। ओनली वी हैव changes is that these are the two changes. Two window is there. There are two window. The default window will have the data editing. There are two sets in the window. Then first is the data view, another is the variable view. है ना? यहाँ पे डेटा व्यू है, यहाँ पे वेरिएबल व्यू है। ये दो विंडो आपको स्पेसेस विंडो के अंदर दिखाई देती। सपोज ये मेरे पास अभी क्वेश्चनियर है, ये क्वेश्चनियर है। ये क्वेश्चनियर का डेटा भी हम एसपीएसएस के अंदर फिल कर सकते हैं। हाउ टू फिल, राइट? ये देखो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जेंडर ऑफ द एम्प्लॉय, मेल फीमेल, एज ऑफ द एम्प्लॉय, हाइट ऑफ द एम्प्लॉय, वेट ऑफ द एम्प्लॉय, फैकल्टी। दीज आर द, सपोज दीज आर द बेसिक क्वेश्चनियर। या हाउ टू इंसर्ट द क्वेश्चनियर, ये भी क्वेश्चनियर हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। अभी इंसर्ट करना है तो जब हम, देर आर टू विंडोज इन स्पेसेस, फर्स्ट इज डेटा व्यू, सेकेंड इज द वेरिएबल व्यू। जब भी हम क्वेश्चन इंसर्ट करना है, डेटा का स्पेसेस के अंदर डेटा लेना है, तो फर्स्ट वी हैव टू क्लिक वेरिएबल व्यू को आपको फर्स्ट क्लिक करना है। वेरिएबल व्यू, रोज डिफाइन द वेरिएबल्स लाइक नेम। ये जो रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, दिस रो इज रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स आपके क्वेश्चन के अंदर हाउ मेनी क्वेश्चंस इज देयर, है ना? कितने क्वेश्चंस है। कई जगह 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना? दिस इज द नेम। वेरिएबल्स, रो रिप्रेजेंट करता है आपकी हाउ मेनी क्वेश्चंस है, नेम। दिस इज द फर्स्ट नेम ऑफ नेम। नेम मीन्स, नेम जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम। हम जब सर्वे करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इस तरह का वेरिएबल भी ओपन करने के बाद फर्स्टली वी हैव टू, इस तरह की आपको फाइल मिलती है। और उसके अंदर नेम, टाइप, वेट, डेसिमल, लेबल, वैल्यू, मिसिंग, etc एक्सेट्रा, मिसिंग एक्सेट्रा आपको एक रोज के कॉलम में लेबल के साथ मिलेगा। तो नेम, नेम एज ए नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, टाइप रिस्पोंडेंट। अगर आपका नाम लेना है तो दिस इज द स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ द डेटा। अगर आपको यहाँ पे नंबर लेना है 1 2 3, दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द डेटा। उसकी विड्थ कितने है, विड्थ कितनी है, तो 8 डेसिमल ऑटोमेटिकली स्पेसेस लेता आपको। एज पर योर कैरेक्टर्स वे टू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। विड्थ, डेसिमल, आपको कहीं डेटा जैसा क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ द डेटा है तो वहां पे आपको डेसिमल डेटा रहता है। जैसे हाइट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन, वेट, मेरा वेट है 50 पॉइंट, लाइक दिस। तो वी हैव टू अरेंजमेंट ऑफ द लेबल। दिस इज नेम इज द सॉर्ट लेबल। यहाँ पे अगर नेम लिखना है, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, इस तरह से नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम किस तरह से लिखते हैं, नेम ओनली आईडी। नेम इज द आईडी, आईडी ऑफ द पर्सन। आईडी लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, या ओनली नेम बोल के लिखते हैं 1 2, लेकिन उसका डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे तो यहाँ पे आईडी ऑफ द रिस्पोंडेंट ऐसा डिटेल में हम लिख सकते हैं। वैल्यू, अगर आपके पास क्वेश्चनर के अंदर सो मेनी ऑप्शंस इज देयर, 1 2 3 4, we have to add this. Suppose sometimes our missing data is there, we have to define it is missing value. Okay, this is the हम जब स्पेसेस विंडो ओपन करने के बाद
like this is the spaces window. हम दिखा दे. तो फर्स्ट इज द वेरिएबल व्यू. वेरिएबल व्यू विंडो के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है, हम अभी 1 2 3 4 5 6 जो कुछ भी रोज हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेम है, नेम है ना, नेम के टाइप्स ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे आपको ओनली VAR कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके बाद नहीं बोलो कुछ भी आपको ओनली यहाँ पे होता हम तुम कैरेक्टरिस्टिक्स 64 कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग्स हम लिख सकते हैं, लेकिन बीइंग विद द कैपिटल लेटर्स. कुछ स्पेस हम दे नहीं सकते यहाँ पे नेम के जैसा. नेम ऑफ द रिस्पॉन्सेस रिस्पोंडेंट ऐसा नहीं लिख सकते. नेम स्पेस देके ऑफ ऐसा नहीं लिखा, एरर दिखाएगा. After we have to only on the name or ID of the respondent. ऐसा ही नहीं सर, only ID और 1 2 3 इस तरह से हम लिख सकते. These characteristics are not allowed in these particular rows. Okay, so this is the name first. Like हाँ numeric. अगर variable with second is the numeric. जब हम न्यूमेरिक में जाएंगे, अगर आपका डेटा इज द न्यूमेरिक फॉर्म, मुझे यहाँ पे वेरिएबल 1 2 3 4 लिखना है, तो वी हैव टू सेलेक्ट वेरिएबल्स. आपको यहाँ पे डायरेक्ट नेम है राम सीता गीता इस तरह से रिस्पोंडेंट का नाम लिखना है, तो वी हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रिंग. वी हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रिंग. अगर आपको कुछ कॉमा फॉर्म में लेना है तो वी हैव टू सेलेक्ट दिस. कुछ साइंटिफिक नोटेशन है, डेट वाइज डेटा है, तो वी हैव टू सेलेक्ट इट. Okay, as per your requirement, we have to select this variable types. I have to select this variable type. लेकिन यहाँ पे देखो width it is automatically spaces के 8 and decimal 2 देता है. As per your requirement, we have to increase or decrease as per your requirement. अगर वेरिएबल से नेम है, मुझे यहाँ पे डिसिमल की जरूरत नहीं नेम के वास्ते, we have to select here 0. Right, so these are the like select the this. Then next is the width. देखो width अलाउ तो यहाँ पे है ना ऑटोमेटिकली स्पेसेस. अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद width के अंदर ऑटोमेटिकली एक width स्पेसेस लेता है. एज पर योर रिक्वायरमेंट वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज. लाइक decimal, number of decimal has to be less than or equal to 16. हम 16 decimal तक हम ज्यादा से ज्यादा decimal उससे कम हम देख सकते हैं. बट इट इज डिपेंड ऑफ. अगर नहीं सर मुझे नेम है और यहाँ पे मैं नेम के वास्ते 1 कोड किया है, 1 नेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है कि ना, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो decimal में ही मिलेगा. उससे अच्छा इट इज डिपेंड अपॉन द nature of the data. If our name is the string form of the data, it is not necessary we have to consider here decimal. We have to convert to 0. Okay. Like then label is the you can specify the details of the variables. ये जो कुछ भी फर्स्ट वेरिएबल मैंने लिया है, सपोज यहाँ पे लिया है age, only we have to write age. So we have to write here detail. एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, इस तरह से एज ऑफ द रिस्पोंडेंट. एज ऑफ द रिस्पोंडेंट वी हैव टू राइट हियर. यू कैन राइट कैरेक्टर्स विद स्पेसेस ऑफ 256 कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे हम लिख सकते. रोल नंबर 13. क्या करूंगा इसका स्कोप. गोयल. Okay. The variable label is like यहाँ पे बोल तो यहाँ पे जो कुछ भी शॉर्ट में लिखना पड़ेगा. यहाँ पे we have to write in details. Like यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे वैल्यू we have suppose my second question is
gender. First is the male, second is the female. तो we have to code here. कोड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. Like this. Coded in the data. Gender with one is the male, second is the female. है ना, फर्स्ट ऑप्शन. जो कुछ भी ऑप्शन, ये वैल्यू जो यूज होती है वहां पे कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? जहां पे वी हैव सपोज इन 100 क्वेश्चंस, suppose 10 questions, 5 questions are option is there, but remaining 5 are not option. अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं होती. अगर ऑप्शन है 1 2, क्वेश्चन 1 का मेल फीमेल है, एजुकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी हायर, एज है, एज में दिया है 5 to 10, 10 to like this question again, so then we have to use the value like this. हमने यहाँ पे वैल्यू को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से अनदर वन विंडो इज ओपन. वैल्यू लेबल लाइक 2 जो है फीमेल दिया है, 2 इज द फीमेल. यहाँ पे 2 लिखो, फीमेल लिखो, देन ऐड इट. यहाँ पे फर्स्ट लिखो, मेल लिखो, ऐड इट. हाउ मेनी ऑप्शन इज देयर? वी हैव टू ऐड one by one. This it is known as the coding of the data. ओके. कहां पे यूज होना है? अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द वैल्यू, अदरवाइज डू नॉट यूज ऑफ द वैल्यू. लाइक मिसिंग डेटा वैल्यूज, अगर यहाँ पे कहीं मिसिंग वैल्यू है, दैट टाइम वी हैव टू यूज द मिसिंग. अगर मिसिंग वो वेरिएबल है, आपके पास डेटा नहीं है, वी हैव टू वन कोड 9999 एज पर यूर 999 यहाँ पे ऐड कर दो. 999 क्योंकि अपना जो डेटा है उसके एक्सट्रीम वैल्यू हमने 99 ऐड कर दो. वहां पे एनालिसिस करते हो, वो डिटेक्ट होगा कि दिस वैल्यूज आर मिसिंग. लाइक like this. See here, this is SPSS window, data view. Suppose one is the 1 to ID. हमने नेम की जगह क्या लिया अभी? ID. ID means what? ID is the नेम की जगह, नेम जो कुछ भी है वो पर्सन का आईडी है. तो फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, फिफ्थ सैंपल. मैंने यहाँ पे जेंडर लिया था मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल. लेकिन ऑप्शन में जो होगा वो आपको जेंडर स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ द डेटा सेलेक्ट, एज, स्कोर्स, लाइक दिस. इस तरह से आपको ये हम सेव द डेटा, जैसा एक्सेल में हम सेव करते हैं उसी तरह से आपको ये सेव हो जाता है. लाइक अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना है या आपको सॉर्ट करना है तो भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं. सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द डेटा. ये बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है. मैं अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, एडिटिंग द डेटा है, आपको एडिट करना है. डेटा के अंदर मुझे गलती से 2 की जगह 200 हो गए. जैसा एक्सेल में एडिट करते उसी तरह से हम, अगर एक कॉलम और एक रो भी कुछ डिलीट करना है तो वी हैव टू आल्सो डिलीट इट, नो प्रॉब्लम. सो दीज आर द सिंपल. इंसर्ट द केस, मुझे एसपीएसएस के अंदर कुछ केसेस इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी जैसा एक्सेल में वन वेरिएबल्स इंसर्ट, सिमिलरली वी हैव टू इंसर्ट द वेरिएबल्स लाइक दिस. लेट्स स्टार्ट. अभी हमें, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द SPSS. लेट्स स्टार्ट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अभी हमने इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो हाउ टू test inference of statistics. This is the testing of the hypothesis. So what is the hypothesis? Hypothesis, it is the pre-assumptions of the problem, pre-assumptions of the statement. In statistics, a hypothesis is the claim or statement about the property of the populations. So
हम जो कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल के बेस पे हम रिसर्च करते हैं उसका इट इज द सैंपल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द populations. So there are two types of the hypothesis. One is the null hypothesis, another is the alternative hypothesis. अभी null hypothesis means जो कुछ भी है देखो यहाँ पे there are two chances होते हैं. One is the अभी सपोज आपका रिसर्च करना है मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट आने वाला है और ऐसा ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाले. देर आर टू हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में नहीं आता नेगेटिव. देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन है ना. देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन. अल्टरनेटिव देर इज द एसोसिएशन बिटवीन. फिर आफ्टर द apply the collection of the data, after applying the statistical tools, then we have to check the hypothesis is accepted or rejected. What is the procedure? What are the steps in testing of the hypothesis? Testing of the hypothesis के steps क्या हो सकते हैं? First is the formulation of null and alternative. आपको जो कुछ भी रिसर्च करना है वहां पे आपको on the basis of objective, firstly we set the null hypothesis and alternative hypothesis. First step. What is the step second? The specification of the level of significance. मतलब what is the level of significance क्या होता है? Level of specification of the जो कुछ भी डेटा है अभी या सोशल साइंसेस पे जो कुछ भी प्रॉब्लम तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करते हैं. मीन्स 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेकिन मेडिकल साइंसेस लाइफ साइंसेस में इट इज द 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इट इज डिपेंड अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. तुम्हारा डेटा कितना एक्यूरेट है ना, कितना एक्यूरेट है उसके ऊपर ये टेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. अगर मेडिकल साइंस में 100 में से 1 नेगेटिव इफेक्ट होता है तो 1%. 100 में से 5 एक ड्रग्स है अगर वो पेशेंट या किसको ही देता है तो उसका 5% नेगेटिव इफेक्ट होता है तो वो ड्रग्स रिलायबल हो सकता है क्या? नहीं है. 100 में से 1% में एक आधा पेशेंट का साइड इफेक्ट होता है. इट इज एक्सेप्टेबल. सो इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा. इट इज डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर. उसके ऊपर हम 5% लेना चाहते हैं या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सोशल साइंस मैक्सिमम टाइम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कंसिडर करते हैं. Selection of the test, then whenever we decide hypothesis testing, then we decide मुझे ये 5% level of significance पे चेक करना है. 5% level of significance means my data is reliable 95%, but 5% error will be there, है ना. ये जो वर्ड है यहाँ पे 2 types of the product. One is the man-made product, another is the God-made product. लेकिन जब साइंस बोलता है आपको दिखने में जो चौक होता है 24 सेम दिखाई देंगे बट माइक्रो लेवल सम एरर विल बी देयर. उसके वास्ते कोई भी परफेक्ट नहीं है. हर डेटा में कुछ ना कुछ एरर होता है. एक्सपेरिमेंट करो उसमें रिपीट एक्सपेरिमेंट करो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है. तो उसके वास्ते 5% एरर हो सकता है या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है लेकिन एरर तो रहता है. उसके वास्ते हम बोलेंगे 5% एरर विल बी देयर. मींस इफ 5% मेरा जो कुछ भी डेटा है उसमें 5% एरर हो सकता है लेकिन आई हैव कॉन्फिडेंस माय डेटा इज रिलायबल 95%. सिमिलरली 1% एरर विल बी देयर बट 99% I have confidence my data is the reliable. Then whenever we select the level of significance, then we will go to the next step. Selection of the test statistics and its computation. जब हम null hypothesis टेस्टिंग के वास्ते null and alternative होता है
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद देन वी डिसाइड द टेस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक, कौन सी टेस्ट अप्रोप्रिएट है. इट इज डिपेंड अपॉन द योर हाइपोथेसिस एंड डिपेंड अपॉन योर like types of the data. The data is nominal data, qualitative data or quantitative data, or nominal data or ordinal data or interval data or ratio data. Every test. And if comparison purpose, अगर मुझे महाराष्ट्र और अनदर स्टेट का कंपैरिजन करना, सो मेनी कंपैरेटिव टेस्ट इज देयर. अगर मुझे एक्स इंक्रीज होता है तो वाई कितना डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन इज देयर. इट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द डेटा. ओके, अगर मुझे एसोसिएट, मेरा डेटा है क्वालिटी है, क्वालिटेटिव डेटा है, और मुझे एसोसिएशन चेक करना है, दैट टाइम वी हैव टू यूज द काई स्क्वायर टेस्ट. इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी है, क्वांटिटेटिव डेटा है या क्वालिटेटिव डेटा है. क्वालिटेटिव डेटा है तो दैट टाइम वी हैव टू अगेन काई स्क्वायर टेस्ट. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा है और कंपैरिजन करना है तो टी टेस्ट. सो मेनी टेस्ट. इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड हाइपोथेसिस ऑफ द डेटा. और उसके बाद टेस्ट के बाद अगर मैन्युअल करते हो तो आपको फार्मूले के साथ से उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर है तो वी हैव टू यूज द सॉफ्टवेयर्स. फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेबल. अगर मैन्युअल यूज करते हो तो टैबुलर वैल्यू रहती है, सिग्निफिकेंस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो रहता है. अगर सॉफ्टवेयर यूज होता है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू जो 5% होता है वो 0.05 से आपकी वैल्यू लेस आती है या ग्रेटर आती है. लेस आती है तो 5% लेवल से अगर आपकी वैल्यू लेस आती है, then we say there is the significant difference between these two, or there is the association, means alternative जो hypothesis होता है वो accept होता है, null hypothesis is the rejected. Okay, this is the 7. In statistics there are two words are the important. One is the parameters, another is the statistics. पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज होता है. अगर आपके पास ओवरऑल पॉपुलेशन सर्वे का डेटा है, पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन जैसा सेंसस होने वाला, जैसा जनगणना होने वाली है, ये पूरा पॉपुलेशन है, उसका अगर एनालिसिस करना है आपको, जो कुछ भी पैरामीटर आपको एवरेज निकालना है या मीन निकालना है या टोटल निकालना है, दैट टाइम वी से इट इज द पैरामीटर्स. हमने पूरा पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल. पॉपुलेशन पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स लाइक सैंपलिंग बेस्ड होता है. ये इंपॉर्टेंट है. ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मैंने बताया है. अभी हमारे पास ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको प्रीवियस ही बताया था कि आपको टाइप्स अगर डेटा पता चलता है तो स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करना बहुत आसान होता है, राइट. तो आवर डेटा इज क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, ये तय करना इंपॉर्टेंट है. अभी हमारे पास बहुत सारे लोग आते, सर यहाँ पे डेटा है, उसका ये करो, क्या टी टेस्ट लगाओ, काई स्क्वायर टेस्ट लगाओ. Inference of statistics is also classified into two types. Inference of statistics classified into two types. First is the parametric inferences. Another is the non-parametric inferences होते हैं. आता parametric और non-parametric में क्या different होता है? How to identify my data? This test is the parametric test. मेरे डेटा को ये पैरामेट्रिक टेस्ट लगने वाली है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगने वाली, या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगने वाली. हाउ टू डिसाइड इट? द फर्स्ट इज द, देयर आर टू ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट. फर्स्ट जो ऑप्शन है, आपका डेटा जो कुछ भी है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है.
अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है, जैसा इंटरवल फॉर्म में है या रेशियो फॉर्म में है, मेजरमेंट फॉर्म में है, दैट टाइम पैरामीट्रिक टेस्ट हम यूज कर सकते। अभी सर फिर ओनली क्वांटिटेटिव फॉर्म है क्या? नो, अनदर टेस्ट इज देयर। We have to check the normality of the data. We have to check the normality of the data. हम वो डेटा क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी चेक। फर्स्ट वी हैव टू चेक द डेटा इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यस, माय डेटा इज क्वांटिटेटिव डेटा। देन वी विल गो टू द नॉर्मलिटी। हम नॉर्मलिटी चेक करते हैं। नॉर्मलिटी चेक करना बोला तो क्या? जो डेटा का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर सेम, वही हमें पता चलता है कि माय डेटा इज द क्वांटिटी, इज द रफ थिंग, रफ आइडिया। अदरवाइज सो मेनी टेस्ट टू चेक द माय डेटा इज द पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम चेक करें कि क्यू प्लॉट है, होमोग्राम है, वहां से भी हम चेक कर सकते हैं कि माय डेटा इज पैरामेट्रिक, normality is there. Another way is there like this. This is the method to check the normality. अगर कहीं डेटा का ग्राफ हम निकालते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा का ग्राफ निकालते हैं, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, बेल से ग्राफ आएगा। देन वी से इट इज द क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ द डेटा, राइट? दिस इज द क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ द डेटा। अगर अपना two conditions, first condition, the data must be quantitative form, the data must be normally distributed, then we will go to the parametric test, right? Then we will go to the parametric test. Non-statistician मतलब कोई भी तो ये properly यहाँ पे यूज नहीं करते। ओनली कंपैरिजन करना है तो लगाओ पैरामेट्रिक टेस्ट, लगाओ, लगाता है। इट इज नॉट प्रॉपर वे। सो पैरामेट्रिक टेस्ट, अगर पैरामेट्रिक टेस्ट है तो 2 सैंपल के वास्ते है, 1 इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम लगा सकते हैं। तो व्हेन टू यूज द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट? अगर सपोज अपने पास, सपोज फॉर एग्जांपल फिलिप्स कंपनी का हम एग्जांपल लेने वाले हैं। फिलिप्स कंपनी है, अब फिलिप्स कंपनी का क्लेम है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उन्हें बताया है कि बहुत अच्छा है, ये कंपनी है, इसे माय प्रोडक्ट इज वेरी गुड। हाउ टू चेक इट? उसका प्रोडक्ट चेक है गुड है या बैड है? हाउ टू चेक इट, है ना? तो उस टाइम हम इंडिपेंडेंट टीचर, 1 सैंपल ही है, ओनली एक कंपनी, फिलिप्स कंपनी है, और बजाज क्लेम माय प्रोडक्ट इज गुड, और हीरो होंडा और हीरो इज क्लेम माय प्रोडक्ट इज गुड। ओनली 1 company its claim कि my product is good. That time we have to use the independent test. Then second thing is the 2 sample में है pair t test, बरोबर? pair t test, pair t test में क्या है? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर का डेटा है। जैसा अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, शुगर है ना, शुगर चेक करने, बिफोर एंड आफ्टर शुगर रहता है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस है या नहीं है ना? यहाँ पे भी डिफरेंस ही है, नहीं है? अभी समझ लो 1 सैंपल टी टेस्ट बताया था प्रीवियस, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है? इंडिपेंडेंट में भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर अनदर ऑप्शन इज द 2 कंपनी, हीरो होंडा एंड बजाज इज क्लेम। हीरो होंडा, बजाज ए एंड बी कंपनी, और क्लेम करते ये कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। बी वाला क्या बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर ये बॉटल है, पानी की बॉटल है, तो वाटर की क्वालिटी मेरी अच्छी है बोलता है, और दूसरी ब्रांड कंपनी है, वो वही वाटर की है, वही बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। एंड वी आर द रिसर्चर, हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन वी सेट द हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं
कि बोथ जैसा हीरो होंडा था, हीरो हीरो होंडा एंड बजाज इज क्लेम, हम हाइपोथेसिस इस तरह से लगाते हैं, नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट. Alternative hypothesis, there is the significant difference between these two products. इस तरह से हम हाइपोथेसिस लगाते हैं और देन वी हैव टू चेक इट. दैट टाइम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम यूज करते हैं. पेयर टी टेस्ट, व्हेन टू यूज द पेयर टी टेस्ट? पेशेंट एक ही है, मैं हूं अकेला, मेरा बिफोर शुगर और आफ्टर, बिफोर फास्टिंग, खाना खाने से पहले मेरी शुगर क्या है, खाना खाने के बाद मेरी शुगर क्या है ना? सो आफ्टर एंड बिफोर. आफ्टर ये ओरिएंटेशन कोर्स के बाद आपके नॉलेज में कुछ इफेक्ट है या नहीं है? बिफोर ओरिएंटेशन, आफ्टर ओरिएंटेशन, दैट टाइम वी हैव टू यूज द पेयर टी टेस्ट. लेकिन दीज टू टेस्ट आर द पैरामेट्रिक टेस्ट है. ये क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है. पैरामेट्रिक टेस्ट मीन्स only two conditions. First is data must be quantitative form of the data. Second, data must be normally distributed. That time we have to use the parametric test. This is the only two sample is there. अब इसका अल्टरनेटिव है, अगर मेरा डेटा समझ लो एटलीस्ट वन assumption से सेटिस्फाइड है. सपोज मेरा डेटा क्वांटिटेटिव है, राइट, मेरा डेटा इज द क्वांटिटेटिव फॉर्म बट नॉर्मलिटी नहीं है, देन डेटा इज ट्रांसफॉर्मेशन. मेरा डेटा क्वांटिटेटिव है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद और देन वी ड्रॉ द डायग्राम्स. अगर मेरा डेटा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मली मिलता है देन अगेन वी हैव टू यूज द पैरामेट्रिक टेस्ट. ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी मुझे डेटा नॉर्मल नहीं मिलता है, then we will go to the non-parametric test. Okay, तो non-parametric test में क्या है? Mann-Whitney U test, then Wilcoxon sign rank test है. And these are the non. अगर ये फेल जाता है तो then we will go to the non-parametric. Non-parametric test it is also known as the distribution free test. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा प्रोबेबिलिटी आता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है. Only these two are the two sample tests. These two are the two sample tests. Another is the more than two sample is there. Suppose Hero one company, Honda is company, then we have to check there are only two companies there. More than two companies there, like three, Hero, Honda, Bajaj, Kinetic, ये सब है और इट्स क्लेम इज माय प्रोडक्ट इज गुड. ये सब क्लेम क्या कर रहे हैं? मेरा प्रोडक्ट अच्छा है. मोर देन टू है, मोर देन टू है, तो हम क्या करते हैं वहां पे? दैट टाइम वी हैव टू यूज द अनोवा, है ना? जैसा बायोलॉजी और कंट्रोल्स लेते हैं, तो बायोलॉजी में बहुत सारे जो बॉटनी में है ना, कॉन्सेंट्रेशन केमिस्ट्री में लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है 10% concentration, 1% concentration, 2% concentration, 3% concentration, ये जो कुछ भी है 4% concentration है, more than 2. This ANOVA is the extension part of the t-test. Independent t-test का ही it is the ANOVA is the extension part होता है. More than 2 independent variables is there, that time we have to use. अभी जैसा ड्रग्स है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ड्रग्स है और उसका इफेक्ट चेक करना है मुझे, विच ड्रग्स इज गुड, देन व्हाट इज द हाइपोथेसिस? null hypothesis, there is no significant difference between these 4 drugs. Means A not is equal to B, B not is equal to C, C not is equal to D. लेकिन अल्टरनेटिव क्या होगा? एटलीस्ट वन ड्रग्स इज सिग्निफिकेंट. एटलीस्ट ये जो 4 है, 4 में से एटलीस्ट वन ड्रग्स इज सिग्निफिकेंस होगा. देन वी हैव टू अप्लाई द ANOVA. ये दिस इज द ANOVA is the extension part of the independent t-test, and repeated measure ANOVA is the extension part of the pair t-test.
This is the two sample test. This is the more than two sample test. एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, मोर देन टू सैंपल्स, क्रुस्कल वैल्यू सिमिलर है. अगर अनोवा फेल होता है, नॉर्मलिटी सेटिस्फाई नहीं होती और अजम्पशंस नहीं सेटिस्फाई होता है, देन वी विल गो टू द क्रुस्कल वैल्यू टेस्ट. एंड अगर रिपीटेड मेजर्स अनोवा अगर फेल जाता है, नॉन पैरामेट्रिक फ्रीडमेंस अनोवा हम यूज करते हैं. दिस इज द सिंपल वे टू, बट दिस टेबल is depend upon our previous data. Previous means data is nominal, ordinal types of the data. If you identify, अगर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा है, तो ये टूल्स यूज करना बहुत इट इज वेरी इजी. दिस इज द बेसिक. अभी हमने जो कुछ भी टेस्ट होती है, जो कुछ भी टेस्ट है, टी टेस्ट है, टी टेस्ट इज यूज टू द टेस्ट वेदर मीन ऑफ द टू ग्रुप इज सेम. जैसा क्लेम होता है कि सर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो दैट टाइम वन सैंपल टी टेस्ट भी होता है. जैसा कंपैरिजन है, जिस डेटा का मीन कंपैरिजन के वास्ते हम टी टेस्ट यूज करते हैं. वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर सैंपल टी टेस्ट. वन सैंपल टेस्ट होते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट हैज ओनली वन सैंपल. यहाँ पे है ना, जैसा मैंने बताया कि एक कंपनी, ओनली सिंगल कंपनी क्लेम किया है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बल्ब है. समझ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसका क्लेम है कि मेरा लाइफ बल्ब ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट है. तो वी आर द रिसर्चर. देन हाउ टू डिसाइड दिस क्लेम इज रियली अप्रोप्रिएट और नॉट? That time we have to use the one sample criteria. What is the assumptions? Assumptions of the, ये जब भी हम टेस्ट यूज करते हैं उसके assumptions क्या है? The dependent variable must be continuous, means interval or ratio, just quantitative form of the data होना चाहिए. The observation are independent of one another. जो डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट, फर्स्ट इतना आ गया बोल के नेक्स्ट इतना नहीं, रैंडमली, रैंडमनेस विल बी देयर, इंडिपेंडेंट है. द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली. जो कुछ भी वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल्स हो, दिस इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये मिनिमम है इसके. फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे. फिलिप्स कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड ऑफ द लाइट बल्ब and claim that under normal electric circumstances, light bulbs, the average life of the bulbs is 1000 hours है. तो कंपनी का क्लेम है, फिलिप्स कंपनी का क्लेम है कि हमारा जो कंपनी का बल्ब्स है, लाइट बल्ब्स है, उसकी लाइफ 1000 आवर्स है. राइट. तो रिटेलर ने वो चेक करना, वो क्लेम सही में सही है या गलत है, तो चेक करने होता है. रिटेलर वांट्स टू टेस्ट दिस क्लेम. रिटेलर ने उसका जो कुछ भी कंपनी का क्लेम है, कस्टमर ने उन्हें चेक करना सोचा. क्लेम एंड हैज टेकन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 लाइट बल्ब्स, 10 लाइट बल्ब. उन्हें रैंडमली 10 लाइट लोगों का डेटा कलेक्ट करा. ही टेस्ट द लाइफ ऑफ द लाइट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस. नॉर्मल सर्कमस्टेंस में सही में जो कंपनी ने क्लेम किया है उसका सही है क्या. तो 10 लोगों का डेटा कलेक्ट किया. तो फर्स्ट कस्टमर के पास जाने के बाद उन्हें नहीं नहीं नहीं, मेरे पास डेटा बताया कि 800 आवर्स उसकी लाइफ थी. सेकेंड में बताया 750, थर्ड में बताया इतना. तो लाइक दिस 10 कस्टमर के पास जाके डेटा कलेक्ट किया एंड देन ही डिसाइड. देन वन सैंपल की टेस्ट किस तरह से, तो टेस्टिंग वेदर लाइट बल्ब हैव द लाइफ. कंपनी का क्लेम क्या है, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से होती है. द नल हाइपोथेसिस किस तरह, द लाइफ ऑफ द बल्ब इज 1000 आवर्स. दिस इज द नल हाइपोथेसिस. कंपनी का क्लेम 1000 आवर्स है. देन हमने ये डेटा, ये जो कुछ भी डेटा है, ये डेटा हमने कलेक्ट किया.
इसके ऊपर हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक किया। मीन्स माई डेटा इज, लोगों ने जो कुछ भी बताया वो 95% करेक्ट, 5% एरर हो सकता है। वही बेस पे हमने नल हाइपोथेसिस इज दिस, आणि अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस बोलो क्या, लाइफ ऑफ द बल्ब इज क्लेम कंपनी का 1000 आवर्स। अल्टरनेटिव है नहीं है, अल्टरनेटिव द लाइफ ऑफ द बल्ब इज नॉट 1000 आवर्स, ये क्लेम है। देन आफ्टर द कैलकुलेशंस, आफ्टर द कैलकुलेशन अगर सॉफ्टवेयर यूज होता है, अगर ये वैल्यू 0.05 से लेस आती है, देन वी से नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, कंपनी का क्लेम रिजेक्ट हो गया है। इस तरह से वन सैंपल टी टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। देन अनदर इज द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम यूज करने वाले, यहाँ पे ओनली वी वांट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, two independent variable. These are assumptions. The dependent variable must be continuous. Again, similar thing. The data must be quantitative form. The observation are independent. Both. ये कंपनी का इतना बढ़ रहा बोल के हमारा इतना इंक्रीज होना, इट इज नॉट। बोथ परफॉर्मेंस आर द इंडिपेंडेंट। द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और उसका हाइपोथेसिस हम सिमिलर थे। देयर इज द नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपनीज, है ना। तो इस तरह से हम हाइपोथेसिस लगा सकते। अनदर इज द पेयर टी टेस्ट है, जो पेयर टी, मेरे पास ओनली 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। हाँ, तो देन नेक्स्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दिस इज द पेयर टी टेस्ट, व्हेन टू यूज द पेयर, बिफोर एंड आफ्टर डेटा इज देयर, बिफोर एंड आफ्टर, है ना। ट्रेनिंग के पहले का उसका सिचुएशन, आफ्टर द ट्रेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस। सिमिलर, द ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी कंटेन एनी आउटलायर्स, उसके अंदर बहुत सारा एरर नहीं होना चाहिए डेटा में। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ग्रुप्स और मैच द पेयर। वही जो बिफोर होगा उसको ही हम नेक्स्ट, वही क्वेश्चन, बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपके अंदर कुछ डिफरेंस हो गया क्या, उसी टाइम, दैट टाइम वी हैव टू यूज द पेयर टी टेस्ट। these are the examples of the thing. So another, these two are the parametric test. Another one most important, useful for the chi-square test. Chi-square test is the non-parametric test. Sometimes it is the parametric test. Whenever we have to check the goodness of the fit of the distributions, अगर कोई डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, तो दैट टाइम goodness of the fit check करना है, तो this time this chi-square test we have to use the parametric. Otherwise maximum times it uses the non-parametric form. अगर non-parametric form means the data must be, जो कुछ भी assumptions है, जैसा हम एसोसिएशन चेक करना चाहते हैं, डेटा इज द क्वांटिटी, क्वालिटी डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा, और हम एसोसिएशन चेक करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी चेक करना चाहते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द chi-square test. This is the formula of the chi-square test. Y minus EN. Observed value minus expected value. What is the observed value? Observed value means अगर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट या सर्वे करने के बाद जो कुछ भी डेटा मिलता है, दिस इज द ऑब्जर्व। जैसा कॉइन टॉस है, कॉइन का ऑब्जर्वेशन क्या है, हेड एंड टेल, दिस इज द ऑब्जर्व वैल्यू। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? अगर टॉसिंग द कॉइन, देन वी गेट द आउटकम्स, देन वी गेट द आउटकम्स। मुझे हेड मिलना चाहता था, लेकिन टेल मिला है, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस है, राइट, दिस इज द outcomes. These are the assumptions of the chi-square test. The sampling method is simple random sampling होना चाहिए, means it is the probabilistic sampling इसके अंदर होना चाहिए, non probabilistic हमें यूज नहीं होती यहाँ पे। Each population is at least 10 times
as large as the respective samples. जो कुछ भी है उसका 10% वो होना चाहिए, मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी 10 तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए. The variables under study are each categorical. Variables, this is the categorical form of the data. Categorical form is what? It is the qualitative form of the data. These are the assumptions like this. This is the like heart disease. How to decide the hypothesis? Heart disease is not associated with cholesterol levels. This is the null hypothesis. What is the alternative? Heart disease is mostly likely in the patients with the high cholesterol diet. फिर ये डेटा हमें मिला है, फिर हमने इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम R-1 इंटू C-1 है, रो-1 इंटू कॉलम-1. दिस टेबल इस तरह से, इसका और इसमें देर इज एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू आर नॉट, वी हैव टू check it. This is the assumptions of the chi-square. This is the example of the chi-square. Okay, now stop here. You have any question, please ask me. आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. एनी क्वेश्चन प्लीज? थोड़ा ये हो गया है स्पेसिस में दिखाना था, लेकिन टेक्निकल इश्यू आ गया है, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है, उसके वास्ते हमने स्पेसिस के प्रॉपर प्रैक्टिकल सेशन नहीं ले चुका हूँ. एनी क्वेश्चंस? If no questions, then I will stop here. Yes, sir. I will try to do out of time. Is there any question from the audience? Please, you can ask. Otherwise, हेलो हेलो हेलो. Yes. यस सर. मिसले सर बात कर रहा हूँ मैं. हाँ सर. मला एक असं विचारायचं होतं की जनरली हायपोथेसिस निवडताना हा. एकच आपण गृहीत धरतो, हायपोथेसिस एकच. परंतु जनरली पीएचडी आणि एमफिल चे जे स्टुडंट आहेत, हा. हे जे गाईड चार चार हायपोथेसिस द्यायला सांगतात, असं कशामुळं? नाही 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 नाही, तसं नाही सर. मी मगाशी सुद्धा तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, एकच हायपोथेसिस हे तुमच्या ऑब्जेक्टवर डिपेंडेंट आहे. जो कुछ भी हायपोथेसिस हे तुमच्या ऑब्जेक्टवर आहे. तुम्ही कदाचित एक हायपोथेसिस असू शकतं, किंवा 2 असू शकतात, किंवा 4 असू शकतात, किंवा 5 असू शकतात. हे तुमच्या स्टडीच्या ऑब्जेक्टिव्हवर डिपेंड आहेत, किती घ्यायचं काय नाही. आता रिसर्च पेपर घ्यायचा असेल तर काही वेळेस ओन्ली एकच हायपोथेसिस घेऊन सुद्धा आपण पुढे जाऊ शकतो. कारण हा हा. कारण मी काही 2007-8 वेळेस मग मध्ये 4-5 सुद्धा हायपोथेसिस तुम्ही घेऊ शकता. परंतु माझं एक म्हणणं आहे की मिनिमम हायपोथेसिस कव्हर द मॅक्झिमम ऑब्जेक्टिव्ह. हा. मिनिमम कारण तुमचा 4 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तुमचे, एका हायपोथेसिस मध्ये बसत असेल तर. आता समजा आपण ऑब्जेक्टिव्ह असं म्हटलं, एखाद्या कम्युनिटीचा एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस चेक करायचा आहे. दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह आहे मला त्याचं काय सोशल स्टेटस चेक करायचा. तिसरा आहे काय इकॉनॉमिकल स्टेटस. हे 3 ऑब्जेक्टिव्ह होऊ शकतात, पण हायपोथेसिस मध्ये आपण घेताना एकच हायपोथेसिस बनवू शकतो. बरोबर. एकच हायपोथेसिस, तिन्हीचं मिळून एकच बी हायपोथेसिस आपण बनवू शकतो. It depends upon our objectives and research area. Anyone? एमफिलच्या काळामध्ये तुमचं जे आजचं लेक्चरर होतं हे कार्लेकर सर, आपले TM युनिव्हर्सिटी पुणे, डीम्ड युनिव्हर्सिटी, त्यामध्ये 7-8च्या दरम्यान आम्ही मेथोडॉलॉजी स्टडी केला. आणि तिथं सांगत होते की छानपैकी हायपोथेसिस तुम्हाला निवडताना एकच निवडला जातो, आणि मग तुमची जे बाकीचे हे उद्दिष्ट असतील ते वेगवेगळे राहतील त्याच्यापर्यंत जाण्याचं. आता तर त्यांचं म्हणजे मी काय सांगत, आता तुम्ही एकही हायपोथेसिस निवडू शकता. तुम्हाला होतं आता समजा एखाद्या केस स्टडीमध्ये तुम्हाला रिसर्च करायचा आहे की डिटेलमध्ये. मला आता समजा
सोशल एज्युकेशनल इकॉनॉमिकवर देर इज नो असोसिएशन, एखाद्या त्यांचं असोसिएशनच नाही. हे तिन्ही तुम्ही एकत्र घेऊ शकता. परंतु बऱ्याच स्टडीवर तुमच्या ऑब्जेक्टिव्हवर डिपेंड असतात सगळ्या गोष्टी. किती ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही तयार करणार आणि स्टडी एरिया कशा त्याच्यात. आणि बऱ्याच वेळेस एक सुद्धा घेऊन तुम्ही पॅरामीटर एक सुद्धा घेऊन तुम्ही रिसर्च पेपर किंवा त्याच्यावर रिसर्च सुद्धा तुम्ही करू शकता. काहीच ना. थँक्यू सर. तीच शंका होती मला. ओके, धन्यवाद. Okay, is there anyone who want to ask question to the sir? If not, I will give you here vote of thank. On behalf of UGC MMTTC, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar. This induction program has started from 15 June to 13 July 2026. On behalf of this department, I would like to thanks to Dr. Om Prakash Shivajirao Jadhav sir, who has given us very excellent knowledge regarding to the application of statistics in research with SPSS program softwares. So, sir, I would like to tell here. So, maximum student who is doing a PhD and research work. So, definitely, maximum student they don't know how to use that types of the softwares in the research, statistic data, how to collect statistic data in the research, and there are many softwares you explain here. And it was very excellent, and it was very informative for all the research student, even all the professor also. So we will apply that type of the software in our day-to-day work and in our research work. And definitely we will try to make very effective research papers as well as research project in our academic career. Thank you once again, and thank you all the participants also. Thank you.